Hello everyone, I am Anuja Shrivastava and today I am going to teach you the last part of class 6 physics chapter 5, in which I am going to tell you about the solar eclipse. And previously I already told you about the lunar eclipse, and also I told you about the types of the lunar eclipse, and today I am going to tell you about the solar eclipse. So what is solar eclipse? In Hindi you are knowing it as a Surya Grahan, and you all are very familiar with this word Surya Grahan. So what is solar eclipse? So as you all know, as I already told you, कि these three objects are moves, and sometime what happened, the moon is come in between the earth and the sun. जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है और मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो समटाइम्स इट हैपेंस ड्यूरिंग द न्यू मून डे व्हाट हैपेंस, दिस मून इट कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड द light of sun, that means sunlight is blocked by the moon. At that time what happened, the sun is not visible to the part of the earth, and this is known as the solar eclipse. That means when the sunlight is blocked by the moon and sun is not visible to the part of the earth, that is known as the solar eclipse. And this solar eclipse, this occurs during the new moon day. Now as I told you about the lunar eclipse, the lunar eclipse is of three types. So solar eclipse, the solar eclipse, it is also a different types, and the four types of solar eclipse are there. First solar eclipse which I am going to tell you, that is known as the partial solar eclipse. So as I told you, partial means some part, only some part are there. That means you can write like that: when the view of sun partially blocked by is called partial solar eclipse. Now look at the diagram here I have drawn. That means only this much part of the sun is blocked by the moon, and rest of the part is going in this part the sunlight is going to fall. That means what is partial solar eclipse? When the view of sunlight, then the view of sun is partially, केवल कुछ पार्ट ही सन का क्या हुआ है, वो ब्लॉक हुआ है मून के थ्रू, और बाकी सारा पार्ट क्या है, उसकी परछाई, उसकी रोशनी जो हो रही है अर्थ के सरफेस पे जा रही है. सो दिस टाइप ऑफ lunar solar eclipse is known as the partial solar eclipse. Now the second type of solar eclipse is the total solar eclipse. Now it is again clear from the name, when the view of the sun is completely blocked by the moon. जब sun की पूरी light क्या है, it is completely blocked by the moon, that type of solar eclipse is known as the total solar eclipse. That means when the view of the sun is completely blocked by this type of solar eclipse is known as the total solar eclipse. Now in total solar eclipse, the umbral region, जो umbra region होता है, that on that region of the earth is the total solar eclipse, और जो rest of the outer the umbra region होता है, that is having the partial solar eclipse. Just look at here, this is the umbra region. So this region of the earth is face the total solar eclipse, and this region of earth will face the partial lunar eclipse. जिनके पास कम लाइट जा रही है, they are having the partial, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं जा रही है, they are having the total solar eclipse. So
This is the total solar eclipse. That means when the view of the sun is completely blocked by the earth. और इसमें भी दो फेज हो गए कि अम्ब्रा रीजन जो होता है, जहाँ अम्ब्रा रीजन है दैट इज द टोटल सोलार एक्लिप्स, और जहाँ अम्ब्रा के सराउंड का रीजन है, बाहर का रीजन है, आउटर अम्ब्रा रीजन है, दैट इज हैविंग द पार्शियल ल्यूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स. Now the third type of solar eclipse, which is very very interesting and it also looks very nice, annular solar eclipse. Now what is annular solar eclipse? In this solar eclipse what happened generally, the moon is very very far away from the earth. moon जो होता है वो अर्थ से बहुत बहुत दूर होता है. at that time जब इस कंडीशन में वो स्ट्रेट आते हैं तो मून जो होता है वो अर्थ के सेंटर, सन के सेंटर पार्ट को तो कवर कर लेता है, बट उसकी एज को क्या करता है, वो छोड़ देता है, जिससे एज जो होती है वो क्या होती है, शाइन करती है, चमकती है और लाइट को प्रोवाइड करती है, वो विजिबल रहती है. और ये क्या बनाता है, एक रिंग ऑफ फायर, अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. एंड दिस इज नोन एज द एन्युलर सोलर एक्लिप्स. एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना, वेरी ब्यूटीफुल इवेंट, बहुत ही सुंदर लगता है व्हेन इट हैपेंस इन द स्काई. सो व्हाट इज दिस एन्युलर, व्हेन द मून इज very far away from the earth. मून क्या है, अर्थ से बहुत दूर है. जब बहुत दूर है तो जब सन पे इसकी शेडो आ रही है तो ये सेंटर पार्ट को सन का तो कवर कर ले रहा है, बट इसकी जो एजेस है, जो उसके कॉर्नर हैं, उनसे क्या हो रहा है, सन विजिबल हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. एकदम ऑरेंज और येलो कलर की लाइट अंगूठी जैसे दिखाई देती है. एंड दिस फिनोमेना वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द रिंग, एन्युलर रिंग स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ring of fire. Now the last type of solar eclipse is the hybrid. Hybrid means होता है mix, hybrid solar eclipse. That means what is hybrid solar eclipse? Look at the diagram here. Here one part is looks like a total solar eclipse and one part is looks like a annular solar eclipse. That means what happens in the hybrid solar eclipse, some part of earth का कुछ part होता है, they are just observing the total solar eclipse, and some part of earth are observing the annular solar eclipse. And this mixing of solar eclipse is known as the hybrid solar eclipse. कि अर्थ के some part of earth see the टोटल सोलार एक्लिप्स, कुछ पार्ट सी क्या कर रहे हैं, टोटल सोलार एक्लिप्स को विजिबल कर पा रहे हैं, और कुछ पार्ट अर्थ के क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट वॉचिंग द एन्युलर सोलार एक्लिप्स. एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना फॉर्म्स द हाइब्रिड सोलार एक्लिप्स. दैट मीन्स द मिक्सिंग ऑफ द सोलार एक्लिप्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलार एक्लिप्स विजिबल इन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के दो अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके का सोलार एक्लिप्स विजिबल हो रहा है. So this is all about the solar eclipse. I hope you all are understand whatever I taught to you. This is very very important and interesting phenomena. And one more thing I want to tell you, whenever the solar eclipse are there, this type of event occurs, so you all are observing the solar eclipse, but do not watch that solar eclipse directly with your naked eye. Use the special type of goggles so that it will not be harmful for your eyes. Now this is all about this chapter light, and this is all about the solar and lunar eclipse. I hope you all are understand. Please watch the video till the end so that you will be clear everything whatever I had taught you. Now wait for the next video. Till then, bye bye. Thank you.